The question is, state Gauss theorem in electrostatics. Using this theorem, derive an expression for the electric field due to an infinitely long straight wire of linear charge density lambda. So the problem is based on the topic Gauss theorem and the use of Gauss theorem to derive an expression for an infinitely long wire having a certain charge, and the given charge density is lambda. So first of all, the statement of the Gauss theorem. So the Gauss theorem states that the flux of the electric field, through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface. So the meaning of this particular statement is, suppose there is a particular charge and there is a surface that is enclosing the charge, then the theorem states that the flux of the electric field through this particular closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed. Suppose this charge is plus q, then we can say that the flux of the electric field is given by q upon epsilon naught. So this is the Gauss theorem, statement of the Gauss theorem. Now let us come to this particular proof of the infinite wire. The electric field due to an infinite wire at a certain distance from this wire, suppose the distance is small r, there is a point P, and at this particular point P, we have to calculate the electric field. So according to the Gauss theorem, we can say that E dot A is equal to the charge enclosed upon epsilon naught. This is the formal expression. Now E dot A means the electric field vector and the area vector. Now you can easily see that due to this infinitely long wire, the electric field is away from this particular charge. Suppose this is the point and this is away due to this particular infinite long charge. Suppose this is a point here, suppose this is Q point, then the electric field is in this direction. So in this way, we can say that electric field is normal to this particular wire. And for the Gauss theorem, for the proof with the help of the Gauss theorem, we have drawn the cylindrical surface, the cylindrical Gaussian surface enclosing this particular infinite charge, infinitely long charge. We have taken a certain length. We have taken a certain length of this wire and enclose it with the cylindrical Gaussian surface. Now the radius of this particular cylindrical surface is small r. So we can say that the total flux corresponding to the surfaces, this particular surface, and the curved surface. So the cumulative sum is the total flux. If you see that for this particular top surface, the area vector is in this direction, and electric field is in this direction. So electric field is making an angle of 90 degrees with the area vector, and we know that E dot A means EA cos theta, and cos of 90 is 0. So it means that there is no contribution of the flux due to this top surface. Similarly, for the bottom surface, the electric field is in the area vector is in the downward direction. Electric field is in this direction or this direction, which is making an angle of 90 degree. So we can say that the cos of 90 is 0. So there is also no contribution of the flux for this particular surface. The only contribution is due to the curved surface. So for the curved surface, we can write it down as E into 2 pi RL. 2 pi RL is the area of this curved surface. Basically, this is equal to the total charge enclosed. Total charge enclosed, this length is L and lambda is the charge density, this is the linear charge density. So we can say that this is lambda L, upon epsilon naught. From this L cancels with this L, and we get this value as E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. So this is the formula for the electric field due to the infinitely long wire. The electric field at a certain distance small r from the infinitely charged wire having a charge density lambda. So this is the derivation. Now let me explain the whole thing in Hindi also. So हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और साथ के साथ एक डेरिवेशन करना है इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से उससे एक सर्टेन दूरी स्मॉल आर पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो फॉर्मल स्टेटमेंट की हम बात करें तो स्टेटमेंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस
के लिए वो 1/ε0 टाइम होता है जितना वो टोटल चार्ज को एनक्लोज करता है। सपोज हमने एक पर्टिकुलर चार्ज लिया, उसका एक एनक्लोज सरफेस लिया, तो उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। नाउ अब हमें जो प्रूफ करना है कि एक सर्टेन दूरी स्मॉल आर पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें E डॉट ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा, वेयर क्यू इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इस सिलेंडर की लेंथ L है, रेडियस स्मॉल r है। यहाँ पे हमने क्या किया है, E जो टॉप सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा एरिया वेक्टर के नॉर्मल होता है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है टॉप सरफेस के लिए अपवर्ड होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि फ्लक्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी इस सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो होगा। ऐसे ही बॉटम सरफेस के लिए फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πrl, सो E इंटू 2πrl। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, लेमडा इंटू एल, लेमडा एल टोटल चार्ज है। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से इस एल से एल कैंसिल किया और E की वैल्यू हमारी आई लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज, और किस पॉइंट पे, स्मॉल आर दूरी पर। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन।